Hello, now we will see the type of cost. Money cost, money expenses incurred by a firm for producing a community or service. Explicit cost, actual payment made on yield factor of production. For example, wages paid to the yield labor or rent paid to yield accommodation, cost of material etc. एक्सप्लिसिट कोस्ट वो कोस्ट होती है जो आउटसाइडर को देते हैं फॉर लैंडलिंग सम सर्विसेज. Implicit cost, it is the cost on sell on factor of production. For example, interest on owner capital, rent of on building, salary for the service of entrepreneurship, etc. Opportunity cost is the cost for next best alternative foregone or sacrificed. These are the type of cost. Now there are more type of cost with fixed cost. Fixed cost is the cost which never change with change in output. It are the cost which incurred on fixed factor of production. This cost remain fixed whatever may be the scale of output. These costs are present even the output is zero. फिक्स्ड कॉस्ट जब आउटपुट जीरो होता है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट रहती है और ये वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल, level of output is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Total fixed cost TFC is 20. TFC is equal to total fixed cost. TFC is also known as overhead cost or supplementary cost and unavoided cost. Total variable cost TBC or variable cost are those costs which are directly with the variation in the output. These costs are incurred on variable of production. Total variable cost आउटपुट के चेंज होने के साथ जो कॉस्ट चेंज होती है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट is also known as prime cost, direct cost or avoidable cost. These costs are zero when level of output are zero. लेकिन लेवल ऑफ आउटपुट जब जीरो होता है तो ये कॉस्ट जीरो होती है.
जब लेवल ऑफ आउटपुट जीरो होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, total variable cost is equal to 0, 10, 16, 25, 38, 55. Difference between total variable cost and total cost, which is fixed. On the basis of meaning, total variable cost varies with the level of output. Total fixed costs do not vary with the level of output. आउटपुट के साथ जो कॉस्ट चेंज होती है वो टोटल वैल्यूएबल कॉस्ट, जो चेंज नहीं होती वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टाइम पीरियड कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट पीरियड, total valuable cost, and in total cost remain fixed in short period. टोटल वैल्यूएबल कॉस्ट शॉर्ट पीरियड में चेंज होती है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड रहती है। कॉस्ट एट जीरो आउटपुट, total variable cost is equal to zero and total fixed cost can never be zero. जब आउटपुट हमारा जीरो होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होती। फैक्टर ओवरलोड एक्शन, टोटल वेरिएबल cost incurred on all variable factors, total fixed cost incurred on fixed factor overload action। शेप ऑफ द कॉस्ट का total variable cost upward sloping and total fixed cost parallel to x-axis. Total cost, it is the total expenditure incurred on production and non-factor input in the production of goods and services. It is obtained by summing total fixed cost and total variable cost at various level of output. Total variable cost plus total fixed cost is equal to total cost.